गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड इन एनी कंट्री। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले चैनल्स में बहुत सारी बातें आपको बता दी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स: प्रोडक्शन मेथड, which is also known as value added method, income method, and expenditure method. Expenditure method is also known as the total outflow method. तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि how is national income calculated by production method. So very simple. Just to understand it, you watch the board here. नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इंडिया के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, एज यू नो मेनी पीपल आर इंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ लोग सर्विसेज बेचते हैं, कई तरह के लोग कई तरह का काम करते हैं। तो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को मेनली हम तीन सेक्टर में डिवाइड करेंगे। मेनली वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू थ्री सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. So look here: primary sector, secondary sectors and tertiary sector. How can you recognize which sector is called primary and which sector is called secondary and which sector is called tertiary? Very simple. Under primary sectors, we are including only those production activities they are directly related with natures. मतलब वहां मैनमेड कुछ नहीं है, जो सीधे नेचर से जुड़ा हुआ है, लाइक फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग, फिशिंग। मतलब जो डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आएगा। Then under secondary sector, we are taking those production activities where the natural things are converted into man-made things. So that means we can say under secondary sector, the manufacturing units. Like a carpenter is making a table with the help of tree, and that tree has come from forestry. So जब वो फॉरेस्ट में था तो प्राइमरी सेक्टर में था। कारपेंटर ने उसे कारपेंटर ने उसे टेबल में कन्वर्ट किया, वो बन गया सेकेंडरी। अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अ टेक्सटाइल फॉर्म इज प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स विद द हेल्प ऑफ रॉ कॉटन। तो रॉ कॉटन इज द प्राइमरी, लेकिन उसने रॉ कॉटन को कन्वर्ट करके क्या बना दिया? कपड़े बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग। आयरन ओर कंपनी है, स्टील कंपनी, यूजिंग द रॉ आयरन ओर। तो रॉ आयरन ओर कमिंग फ्रॉम द माइंस, प्राइमरी। लेकिन एक स्टील कंपनी ने उसे स्टील में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि प्राइमरी में वैसे सब सेक्टर्स को लेते हैं जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड हो, और मैन्युफैक्चरिंग में हम वैसे सेक्टर्स को लेते हैं जहां पे नेचुरल थिंग्स को हम मैनमेड थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। द थर्ड इज कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। अंडर टर्सरी सेक्टर वी आर टेकिंग ओनली सर्विसेज सेक्टर, लाइक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टीचर, डॉक्टर्स, engineers, film actor, actress. Apart from this, different types of invisible products, apart from different types of services which are generating income. Then students, look here, every sector will find its gross value of output at market price. Primary sector will find its GBOMP separately. Secondary sector is finding its GBOMP separately.
tertiary sector is also finding GBOMP separately. But remember, for finding GBOMP under primary and secondary sector, we are adding sales plus change in output plus output produced for self-consumption. The very important point, under tertiary sector, only the value of sales are considered as the part of value of output. यानी सर्विसेज सेक्टर में कोई चेंज इन स्टॉक नहीं काउंट होगा, सर्विसेज सेक्टर में कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन काउंट नहीं होगा, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी में होगा। अब तीनों सेक्टर ने अपना जीबीओएमपी निकाल लिया। अब तीनों सेक्टर अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सेपरेटली अलग अलग माइनस करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में जब हम जीबीओएमपी से आईसी को माइनस करेंगे, देन वी आर गेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सिमिलरली जीबीओएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर से जब हम सेकेंडरी सेक्टर का आईसी यानी इनपुट्स एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, तो दैट बिकम्स जीवीएएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सिमिलरली द जीबीओएमपी ऑफ टर्शरी सेक्टर से जब हम आईसी को माइनस करेंगे, इट बिकम्स जीवीएएमपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने तीनों सेक्टर का अलग अलग जीबीएमपी निकाल दिया। अब हम इन तीनों सेक्टर के जीबीएमपी को जब एक साथ ऐड करेंगे, दैट बिकम्स सिग्मा जीवीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इट बिकम्स gross domestic product at market price, that is known as GDPMP. And everyone is knowing how is GDPMP converted into national income. GDP is not your national income, so don't get confused. It is only gross domestic product at market price. So dear students, इस gross domestic product at market price से जब हम depreciation को माइनस करेंगे, जब हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे और जब हम एनआईटी को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक टर्म आएगा, एक रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। यानी जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, वी गेट एनएनपीएफसी एंड दिस एनएनपीएफसी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस based on production method. But at the time of estimating national income by production method, you have to remember few points that is called as precautions, like output produced for self-consumption of goods are included, but output produced for self-consumption of services are not included. Imputed values of fixed assets used in the production process, that would be included. Income generated from illegal practices are not included. So like this, you should know all these things. So thank you for listening me. Next program में मैं आपको बताऊंगा how is national income calculated by income method.